Hello viewers, welcome to my new lecture, and this lecture is related to respiratory system. So if you remember, so we have already talked about the different respiratory system and the parts, the lower respiratory tract and the upper respiratory tract. So today this is very important and you must will have to listen this lecture. The first one is inspiratory reserve volume. So inspiratory reserve volume is the volume so that can be inspired beyond restful inspirations. So what will be happen in inspiratory reserve volume? So it means that whenever the oxygen is inhaled, so during rest positions or during inspiration, so the oxygens it will go inside, and the total volume which is occupied by that oxygens which is already in reserve state. So volume that is inspired beyond the rest positions, and you know the total inspiratory reserve volume is 3100 ml, mean 3.1 ml, you can say 3 liter or 3.1 liter, you can say, or 3100 ml. The second one is tidal volume. Tidal volume is the volume of the single breath, usually at the rest. So tidal volume it is the volume of the single breath. एक यानी सांस लेने के दौरान स्पेशली के कितना मतलब ऑक्सीजन जो है वो रेस्ट पोजीशन में वो आपके लंग्स को पहुंच जाता है. अच्छा, तो टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml. इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द वॉल्यूम व्हिच कैन बी एक्सपायर्ड बियॉन्ड ए रेस्ट फुल एक्सपायरेशन. तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में होता है कि जब हम एक्सेलेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, तो वो यानी ऑक्सीजन का यानी ईयर का वो वॉल्यूम जिसको हम बाहर की तरफ उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक्सपायर करते हैं. एंड आफ्टर एक्सपायरेशंस हमारे पास जो वॉल्यूम बच जाता है वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो टोटल है तकरीबन 1200 ml. Residual volume remaining in the lungs after maximum expiration. तो मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है आपके लंग्स में यानी एयर का रह जाता है. सो दिस वॉल्यूम केप्स द alveoli inflated. तो इस रेजिडुअल वॉल्यूम का मेरिट ये है, इसके फ़ायदे ये हैं कि वो आपके alveoli को क्या करते हैं, उसको इन्फ्लेट रखता है. जिस तरह आप एक बालून जो है, ठीक है, एक बालून जो है उसको आप इन्फ्लेट करते हैं या आप ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना. सो दिस इज द ये सारे जो हैं ये नेचुरल मैकेनिज्म्स हैं. वाइटल कैपेसिटी में द मैक्सिमम वॉल्यूम व्हिच कैन बी वेंटिलेटेड इन अ सिंगल ब्रेथ. वाइटल कैपेसिटी ये बराबर है आई आर वी के इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसको वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है. सो दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम व्हिच कैन बी वेंटिलेटेड इन अ सिंगल ब्रेथ. इसके अलावा वाइटल कैपेसिटी वेरीज विद जेंडर, एज एंड बॉडी बिल्ड्स. मेजरिंग द vital capacity gives a device for the diagnosis of respiratory disorder and a benchmark for judging effectiveness of treatment. The vital capacity is reduced in restrictive disorder but not in disorder that are favourably obstructive. So then you can see FEV, the percentage of the percentage of the total vital capacity forced expiratory volume which is expelled in the first second, it should be at least 75%, and then it should be reduced in obstructive disorder. Okay, now look at here, these are the
malfunctions and disease of the respiratory system. So these are the, you can say, the different diseases which is related with your respiratory system. One is asthma. So asthma is severe allergic reaction characterized by the constriction of the bronchioles. So bronchitis is the inflammation of the lining of the bronchioles, and emphysema, it is the condition in which the alveoli deteriorate and causing the lungs to lose their elasticity. So all these are respiratory disease related to with your upper and lower respiratory system. And you know about pneumonia, that it is the condition in which the alveoli become filled with the fluid, preventing the exchange of gases. तो डेफिनेटली आपने सुना होगा निमोनिया में आपके जो अल्वेलाई हैं, तो वो असल में फ्लूइड से भर जाता है, ठीक है, तो फिर गैसेस एक्सचेंज नहीं होता एंड देयर मे बी चांसेस ऑफ सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस। तो वैसे निमोनिया में ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होता है, आपके जो ब्रोंक्यूल्स है बिकम कॉन्स्ट्रिक्ट्स, तो कंस्ट्रक्शन से डेफिनेटली ब्लड सप्लाई का होना, तो देयर आर मेनी कॉम्प्लिकेशंस, वो फिर हम खैर डिजीज में डिस्कस करेंगे। लंग्स कैंसर इरेगुलर एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ट्यूमर इन द लंग्स टिश्यूज। तो मतलब कैंसर का नाम जब भी आता है तो इसका मतलब है कि एबनॉर्मल आउटग्रोथ बनना, अनकंट्रोल ग्रोथ जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, या इरेगुलर, ठीक है। ये सिर्फ आपके लंग्स टिश्यूज में, क्योंकि लंग कैंसर उन्होंने कहा है तो आपके लंग्स में, लंग्स कैंसर में ये होता है कि अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, ठीक है, सेल एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, ठीक है, द ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर इन द लंग्स टिश्यू। अच्छा, ये याद रख ले, 4 रिस्पायरेटरी प्रोसेस हैं: ब्रीथिंग, वेंटिलेशन, एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स; एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड; एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में एयर है और इसके अलावा आपका ब्लड इसमें इन्वॉल्व है; इंटरनल रिस्पायरेशन में गैस एक्सचेंज है, ठीक है, आपके ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान; सेलुलर रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, और उसको यूटिलाइज करने से, ठीक है, फिर एटीपीज बन जाते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है जी। अच्छा, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है, इसके अलावा हार्ड फॉर्म में भी है, तो अगर किसी को चाहिए तो आई कैन शेयर विद ऑल माई स्टूडेंट्स who belong to different regions, not only in KPK, if they belong to any area, so you can directly contact me. So that is sure, I will make available all this content for you. Thank you.